Dimension formula for your h square nu square divided by mc square divided by 1 plus h into nu divided by m into c square. H is a Planck's constant beta, mu is your frequency, m is your mass, c is your velocity. अपने को मालूम है, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं. h into nu divided by your m into c square का जो डायमेंशन होता है ना बेटा, it is m0 l0 t0. डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. Anything added to your dimensionless quantity will be equal to what for me? Dimensionless. अब निकालना किसका है अपने को? h स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू सी स्क्वायर. इसमें से h इंटू न्यू डिवाइडेड बाय mc स्क्वायर तो हो गया. तो देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, h इंटू योर न्यू डिवाइडेड बाय m इंटू योर सी स्क्वायर इंटू h इंटू न्यू. h इंटू न्यू इज नथिंग बट डायमेंशंस ऑफ व्हाट? एनर्जी, बिकॉज E इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू. एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t पावर -2 है कि नहीं? Yes, sir. Next one, second one. Area of the square plate is 100 plus or minus 2 meters square. Its sides is how much for me? कोई बोल सकता है? Area of the square plate दे रखा है मेरे को 100 plus or minus 2. Its side is how much? Area का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Area of a square plate will be equal to your L square. अपर लेंथ कितना दे रखा है मेरे को बताइए? एरिया अगर ये दे रखा है तो L will be equal to how much for me बेटा? 10 मीटर ओनली ना, क्योंकि एरिया दे रखा कितना मेरे पास? 100. दिस इज योर 100 इज इक्वल्स टू योर L स्क्वायर. तो L की वैल्यू आ गई 10, isn't it? अब इसको एरर लिख लीजिए एक बार. अगर हम लोग इसको एरर लिख रहे हैं बेसिकली, देखिए एरर कैसे लिख सकते हैं. इसका एरर अगर मुझे लिखना है, ये इज इक्वल्स टू योर L स्क्वायर के लिए, so that will be equal to how much for me beta? Delta A divided by your A is equals to 2 times of delta L divided by L. अपने को निकालना क्या है बेटा? साइड यानी डेल्टा L, क्योंकि L तो आ चुका है अपने को 110 meters. डेल्टा L will be equal to how much बेटा? डेल्टा L will be equal to your ये हाफ इधर आ जाएगा, so this will be equal to your ये हाफ नीचे आ जाएगा. This will be equal to your delta A divided by A into your L कर लो. So that will be equal to your half into delta A by A. Delta A is given how much for me बेटा? यहाँ पर देख लो कितना है मेरे पास. एरर कितना है? बेसिकली 2. Delta A is nothing but 2 divided by actual area is nothing but equal to your 100 into length दे रखा है मेरे पास कितना है? देखो यहाँ पर 10. तो 10 ones are ये हो गया 10 में, ये 2 और ये 2 चले गया. That means this will be equal to how much? 1 by 10. 1 by 10 मतलब कितना? 1 meter. तो आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? L प्लस डेल्टा L. L की वैल्यू आ गई 10 और ये आ गया 8. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर. क्लियर है सभी को? चलिए. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेक्टर्स प्रोजेक्शन. है A बार दे रखा है, B बार दे रखा है बेटा. A बार इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप and B bar is given as of here 2I cap plus J cap plus 2K cap. The projection of the P bar on your A bar will be equal to your how much? Directly formula based question है basically. I hope you might have been remembered. Projection of your B bar on your A bar will be equal to how much beta? B bar dot your A bar into its unit vector, that is nothing but of your A cap. A cap. So B bar dot A bar into your A cap का formula. So B bar is given for me in the problem. B bar is given how much in the problem? 2I cap plus J cap plus 2K cap. This will be equal to 2 into your I cap plus this one is your J cap plus of your 2 into K cap dot A. A की वैल्यू कितनी है बेटा? A value is given as right now I cap plus 2 J cap plus your 2 times of your K cap into A cap. A cap का मैग्नीट्यूड लिखना. A cap का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कितना हो जाएगा बेटा? I cap plus of your this is 2 into J cap plus of your 2 K cap divided by magnitude of this one. तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? A cap कैसे लिखते हैं याद है ना आप लोग को? A cap will be equal to A bar divided by mod of A. That means this will be equal to under root of your 1 square plus 2 square plus 2 square. So 2 square is 4 plus 4 8 8 plus 9 यानी 3 हो जाएगा ये basically, isn't it? So this value will become for your 8 by 9 into your I cap plus of your J cap plus of your ये कितना आ जाएगा 2J cap plus of your 2K cap. 8 by 9 क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा 2 square 4 plus 4 8 8 plus 1 9 8 by 9
So 8 by 9 will be equal to this one. यानी first option will be the answer. Multiplication कर लीजिए. चलिए, very good. Next one, moment of inertia है. 7th one भी वो दे रखा है. 8th one, work power energy. 9th one is right now again rotational mechanics. 10th one देख लीजिए बेटा. What is the value of your question number 10? Anyone? The escape velocity, ये gravitation का question है बेटा, ये कर सकते हैं अपन. The escape velocity from the spherical planet is VE. The escape velocity corresponding to another planet of twice the radius and half the mean density is how much? Escape velocity का formula बोलो एक बार जल्दी से. Escape velocity is Gm by R. to under root of 2 times of capital G capital M divided by R. R. इसको अपन density में लिख सकते हैं ना बेटा. Mass will be equal to how much for me? Volume into density. Volume is 4 by 3 pi into your R cube. So mass is equals to volume into density. Volume of the spherical body is 4 by 3 pi into your R cube into your rho. वो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा. 4 into 2 that will be 8. यानी escape velocity will be equal to under root of your, this will become for me 8 pi G R square into rho divided by over 3 आ जाएगा. क्योंकि क्यूब में से यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया बेसिकली, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने. तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं escape velocity is directly proportional to radius and directly proportional to root of rho. यानी escape velocity VE divided by V will be equal to R divided by 2R. देख लीजिए डाटा दे रखा है twice the radius and density will be equal to, अगर इसकी density rho है तो इसकी density under root of rho by 2 है. half the mean density बोला है ना. तो कितना आ रहा है देख लीजिए बेटा. ये R चलेगा, ये रूट चले गया, तो ये √2 by 2 आ जाएगा. तो V value will be equal to how much बेटा? VE divided by V is equals to, this is √2 divided by 2. So that is √2 divided by 2 will be written as √2 into √2. ये वाला चले गया. VE divided by V is equals to 1 by √2. यानी V value will be equal to how much बेटा? V is equals to √2 times of your escape velocity. तो क्या ऑप्शन होना चाहिए देख लीजिए इसका, या रूट ई, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाए. ठीक है. Yes, sir. चलिए. A glass beaker having a mass of 390 grams and interior volume of 500 centimeter cube floats just submerged in water. Just submerged मतलब buoyant force has been balancing the weight. When it is half filled with the water, half filled with your water, the density of the water is how much? Again very good question बेटा. 11th one देख लीजिए. यहाँ पर क्या है? Glass beaker having a mass कितना? 390 grams and an interior volume of your 500. Just floats, just submerged in the water when it is half filled. यानी इंटीरियर वॉल्यूम कितना है? 500 है, तो इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 3, तो 250. यानी 390 is the weight plus this is your 250 will be equal to volume of the body into your 1. ठीक है ना. So outer volume of the beaker कितना हो जाएगा बेटा? Interior volume is given how much? Sir, can you repeat? कितना आ जाएगा? Outer volume of the beaker will be equal to how much बेटा? Outer volume will be equal to how much? 640 centimeter cube. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ मैटर कितना हो जाएगा? जितना वाटर इसमें रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ मैटर यानी जो भी मैटर है इन बीकर कितना बचेगा बताओ जल्दी से. 640 में से अगर इंटीरियर का वैल्यू जो रखना 500 निकाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी निकालना है बेटा. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 140. ये वाला चले गया. 39 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ रहा देखो. 14 2 में जाएगा, दैट इज 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 2.9 2.8 यानी सेकंड ऑप्शन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन. Cylindrical vessel is filled with water up to a height of 2 meters on a stand. क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए एक बार. Cylindrical vessel, ये मेरा cylindrical vessel है and filled with the water up to a height of 2 meter. Okay, is this filled with the water up to a height of your 2 meter on a horizontal plane. The side of the wall has a small circular hole. Okay, side of the wall has small circular hole touching the bottom. Okay, touching the bottom मतलब it will be equal to down. तो ये हो गया 2 मीटर यहाँ तक, यहाँ से right now एक होल.
touching the bottom, the velocity of the water coming out from the hole. Velocity of a flux direct formula V is equals to under root of 2g into your h. That is known as velocity of your reflex का formula. That is under root of 2 g की value ले लीजिए 10 into height दे रखा है 2. तो कितना आ जाएगा बेटा 4. यानी this will become for me 2. यानी 2 into root 10 meter per second. 2 into root 10. Fourth option will be the answer. कितना बेसिक क्वेश्चन था वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम सरफेस टेंशन. ये कर सकते हैं अपन. दिस इज फ्रॉम योर फ्लूइड डायनामिक्स में था प्रीवियस क्वेश्चन. और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स में था. एक फ्लूइड स्टैटिक्स में से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ. अब देखिए बेटा, रिंग इज कट फ्रॉम द प्लैटिनम ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर 8.5 एंड एक्सटर्नल डायमीटर 8.7. ओके, रिंग है बेटा मेरे पास. इनर दे रखा है, आउटर दे रखा है. इट इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन वाटर सरफेस. इफ एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ योर 4 ग्राम weight is required to pull it away from the water surface, then surface tension of the water will be equal to your how much? Very famous question, isn't it? Surface tension का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Surface tension is equals to force divided by L. तो फोर्स होना है मतलब क्या लिख सकता हूँ? T into your L. तो यहाँ पर L is nothing but what? Total circumference. तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, और F is equals to T into length will be equal to 2 pi into your R1 plus of your 2 pi into your R2, isn't it? तो इसमें से अपने को सरफेस टेंशन निकालना है. तो इसमें से F is equals to that will be equal to T into your 2 pi into ये हो गया R1 plus of your R2. तो सरफेस टेंशन कितना बन गया बेटा? T की वैल्यू निकालो यहाँ पर. इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए. सो T वैल्यू विल बी इक्वल टू योर कितना आ जाएगा बेटा? इट इज योर F डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू योर R1 प्लस ऑफ योर R2. कैलकुलेशन कर लीजिए. फोर्स कितना दे रखा है बेसिकली प्रॉब्लम में? 4 ग्राम वेट. यानी कितना लोगे बेटा? 4 ग्राम मतलब 4 इंटू ग्राम विल बी 10 to the power of -3 इंटू वेट मतलब 10. जी की वैल्यू में लेना है बेसिकली, mg वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14. 2 इंटू योर 3.14 into your radius. रेडियस नहीं दिया तो रेडियस को मैं कह सकता हूँ डायमीटर. डायमीटर इज योर 2 times ऑफ योर रेडियस एंड ये रेडियस इज इक्वल्स टू d/2. तो d/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा d1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2. अगर 2 कॉमन ले लो तो ये 2 चले जाएगा. इंटरनल डायमीटर दे रखा है मेरे पास 8.5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 8.7 सेंटीमीटर. कन्वर्ट दैट वन इनटू मीटर्स. तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो यहाँ पर कहाँ पर देख लीजिए. तो इसको हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए. इसको कहाँ लिखूं? इसको यहाँ ही लिख देता हूँ. सो T is equals to 4 into 10 power -3 into 10 divided by 3.14 into your D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.5 सेंटीमीटर प्लस 8.7 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power of -2 कर लीजिए, है क्या ना? सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर. इसको आपकी दे रखा है सेकंड ऑप्शन, आप लोग चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट नाउ कनेक्टेड टू योर कौन सा हीट चैप्टर, ये भी कर सकते हैं. The temperature of 200 gram of water is to be raised from 24 to 90 degrees centigrade by adding 100 degrees centigrade steam to it. The mass of the steam required for this purpose will be equal to your how much? कोई कर सकता है? कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन. Temperature of your 200 gram of water is to be raised by 24 to 90 degrees centigrade by adding steam which is at your 100 degrees centigrade. यानी heat lost by one body must be equal to heat gained by another body. यही फॉर्मूला लगेगा ना बेटा. Heat lost must be equal to your heat gain. कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है ना. Heat loss मतलब mass steam will be losing. The latent heat of the steam is nothing but 540 is equals to mass of your water that will be equal to your plus into your, it is coming to some specific heat of water 1 into 100 से 90 square minus of your 90. That must be equal to temperature of water is 200 grams of water into your specific heat of water is 1 and this is coming from 90 to your 24. ये हो गया मेरे पास heat gained by this. तो you can simplify this one बेटा. यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए ये कितना आ रहा देख लीजिए. 200 190 minus 24, this will be equal to 200 into this will be equal to 66, ठीक है ना. तो 100 minus 90 that will be equal to 10.
isn't it? 810 और यहाँ पर 540, तो this will become for me your m into your 550 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? Is that clear? तो मास निकाल लीजिए ना, this will give you the mass. Mass is equals to 200 into 66 divided by 550. ये वाला चले गया, so it is your 20 into 66 divided by 55. So approximately we'll be getting this one as of your 24 grams. Second option. 24, very good. If lambda m denotes the wavelength at which the radiative emission from the black body at a temperature T Kelvin is maximum. Stephen's law called the Wings displacement law का formula. याद है Wings displacement law का formula? Lambda m into T will be equal to your constant, isn't it? यानी lambda will be inversely proportional to temperature to the power of your 1. So what will be the answer for this one? Third option. ठीक है ना? चलिए 16th one देख लीजिए. 0.01 kg of nitrogen is being enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees centigrade. The amount of the heat transferred to the gas to double the RMS speed of the gas molecules will be equal to your how much? क्या बोल रहा है यहाँ पर? 0.014 kg of nitrogen is enclosed in a vessel at temperature of 27. The amount of heat transferred to the gas to double the RMS speed will be equal to how much? Okay. RMS speed का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? VRMS is equal to under root of 3RT divided by m. ठीक है ना? So gas in the cylinder मतलब क्या हो जाएगा? सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम will remain constant, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा मेरे पास constant. तो हीट जो सप्लाइड करेंगे that will be equal to Q is equals to N into CV into your delta T. Constant वॉल्यूम पे हो जाएगा ना? तो velocity लिख रहा हूँ मैं, V1 divided by V2 will be equal to under root of your T1 divided by your T2. यानी the amount of the heat required to double the RMS velocity, यानी अगर ये V है, V2 will be equal to your 2V. 2V का ये हो गया whole square. That will be equal to your temperature is 27 plus 273, 300 divided by T2. इसमें से मुझे T2 की वैल्यू आ जाएगी, it is 1200 Kelvin. इसमें से Q की वैल्यू निकालिए, the amount of heat. So Q is equals to your number of moles कितना दे रखा है Fermi? कितना आ रहा देखो 0.01 kg and will be equal to how much Fermi beta? Mass by your molecular weight of your nitrogen. Isn't that is the reason I'm writing that one as of your half into your CV. That is equals to your 5 by your 2 into your R into temperature difference. Temperature difference मतलब कितना हो जाएगा बेटा? T2 minus T1. Already T1 दे रखा है 27 मतलब 300, ये हो गया 1200 यानी 1200 minus of your 300. यहाँ हो गया 1200 minus of your 300. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. This will become for me 1/2 into your 5/2 into your R की वैल्यू will be equal to your how much बेटा? कैलोरीज में दे रखा है तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2. ये याद रहना चाहिए आप लोग को. Into 1200 minus 900, 300 will be equal to 900. तो A2 चले गया. 5 9s of 45, 45 divided by 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास approximately 2250 कैलोरी. फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17. If 90 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at a constant pressure from 30 degrees centigrade to 35 degrees centigrade, the degree of freedom of the gas molecule is your how much Fermi? Okay, 90 calorie of your heat is being given for me. यानी Q दे रखा है. Q value is given as of your 90 calorie. To require the temperature of 2 moles, यानी N is given for me 2 moles of an ideal gas at a constant pressure from 30 degrees centigrade to 35 degrees centigrade, the degrees of freedom will be equal to your how much? Yani we know the formula dq will be equal to your du plus of your dw, isn't it? Yani internal energy will be equal to your q minus of your delta w. How do you write the work done better? So delta w will be equal to nr into your delta t. N is given how much for me? 2 into R value in your moles में दे रखा है ना बेटा. So capital R की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं? That is nothing but 2 into temperature difference कितना है? कैलोरीज में है, तो इसलिए मैंने R की वैल्यू 2 ले लिया. So 35 minus of your 30, that will be equal to your 5. So this will be equal to how much? 5 20. तो ये हो गया 20 कैलोरीज. और Q कितना दे रखा? 90 minus of your 20. That will be equal to 70 calories. So ये हो गया delta U, isn't it?
सो पूछ रहा क्या बेसिकली अपने को बेटा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब गामा इज इक्वल्स टू योर Cp डिवाइडेड बाय Cv, that is how much for me 9/7, isn't it? So I can write in terms of degrees of freedom 1 plus 2 by f will be equal to your gamma. It is 1 plus 2 by your f will be gamma is 9/7. Yani 2 by f will be equal to 9/7 minus 1. That means this will be equal to 2 by 7. So degrees of freedom will be equal to your 2 by f is equals to 2 by 7. 2 gets cancelled. So number of degrees of freedom will become for me 7. 2 by 7. Good question. चलो क्वेश्चन नंबर 18 में is also heat का क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं. The temperature inside and outside of a refrigerator at 273 Kelvin and 303 Kelvin respectively. Assume that refrigerator cycle is reversible. The heat is rejected outside for every joule of the work will be equal to your how much? Refrigerator के लिए फॉर्मूला याद है आप लोग को, बीटा will be equal to your T2 divided by T1 minus of T2, or else that will be equal to your Q2 divided by work done. So T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 273 divided by 303 minus 273, that will be equal to your Q2 divided by work done कितना है बेटा, for every joule यानी that will be equal to 1, isn't it? तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा देख लीजिए बेटा, जल्दी से बताइए. 273 divided by 303 minus 273 कितना आ जाएगा 30, that is equals to your Q2. So Q2 will be equal to your how much? 3 9s are 27. So 9. कितना आ जाएगा बेटा 30 है ना, 9 joules. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 19. Assume a sitar string is being plucked at 1/6 of its length from one end. The most prominent harmonic will be equal to your how much? ये string है मेरे पास and assume a string is being plucked at 1/6 of its length from one end. The most prominent will be equal to how much? यानी number of loops ऐसा कुछ बनेंगे इसके अंदर, पता नहीं कितनी बनेंगे, मैं रफली ले रहा हूँ बेसिकली. तो समवेयर यहाँ पर से लेके यहाँ तक का ये लेंथ कितना है मेरे को 1/6 ऑफ दैट वन, isn't it? 1/6 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आ जाएंगे. तो पॉइंट ऑफ प्लकिंग विल ऑलवेज गिव मी एंटी नोड. तो 1 2 ये 3 आएगा, तो यहाँ तक ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा. सो इट विल गिव मी योर 3 हार्मोनिक्स. ठीक है, ये 3 रहेगा तो ये 1/6 होगा ना बेटा, ठीक है ना. Clear for everyone? चलिए 21 tuning forks are arranged such that every fork gives 5 beats per second with the next. The last fork has a frequency that is double of the first. The frequency of the 11th tuning fork will be equal to how much? मैंने अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोग को. For 21 forks there will be how many pairs बेटा, 20 pairs. यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 2n minus of your n is equals to 20 into your 5, isn't it? यानी this will be n is equals to will be equal to your 100. So frequency यानी n of your 11th will be equal to your n1 plus of your 10 into your 5, that will be equal to n1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, n1 की वैल्यू कितनी है 100 plus 10 into 5, 10 5 is 50, that will be equal to 150. So 150 will be the answer. Direct question. Question number 21. When an oscillator completes 50 oscillation, its amplitude reduces 1/3 times of the initial value. The amplitude when it completes 100 oscillations will be equal to your how much? Again direct question and very simple question. कोई आंसर बता सकता है इसका? मैंने क्लास में करवाया भी था, सेम क्वेश्चन एज इट इज, डिटो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए. A is equals to your A naught exponential to the power of minus B by 2m into T. एक्सपोनेंशियल से बचते बचाते कैसे निकलना बोल के भी बताया था मैंने. ए की वैल्यू कितनी दे रखा है प्रॉब्लम में 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी A naught by 3 is equals to your A naught exponential to the power of minus of B by 2m into time. टाइम कितना दे रखा है बेटा 50 ऑसिलेशन, यानी 50 टाइम्स ऑफ योर T. तो ये A naught और A naught चले गया,
So this will be equal to your exponential to the power of your minus 50b into your t divided by 2 times of your m is equals to your 1 by 3. यानी ये value will be equal to your a naught exponential to the power of minus of b by your 2m into your ये हो गया next one is 100 oscillations के लिए यानी 100 t यानी this value will become for me a naught into 1 by 3 का whole square. ये 50 है ना बेटा, ये 100 है, isn't it? So this will become how much for me? A naught divided by 9. That means it will be equal to how much for me? 1 by 9 times of initial value. Ditto problem मैंने क्लास में भी करवाया था. ये तो electrostatics का question है. I'm not doing the electrostatics का question. 23 is your LC oscillation, capacitor, then current electricity. 26 is current electricity. You can do it out. 27 is also current electricity. 28 is also current electricity. 29 is magnetic effects of current. And 30 is also magnetic effects of current. 31 magnetic effects. 32 is galvanometer. 33 bar magnetism. 34 is again EMI. 35 is again your capacitors. Then question number 36. यहाँ पर आ जाइए बेटा. Question number 36 के पास आ जाइए. Optics का. When light is incident on interface of a glass and air as shown in figure, if the green light is just totally internally reflected, okay, then the emerging rays in the air will be equal to how much? देखो अगर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, mu is equals to 1 by your sine of your c, and you know that refractive index is inversely proportional to your wavelength, so I can say that sine c will be directly proportional to wavelength. And angle of incidence is such that it is equal to the critical angle for green color. So angle of incidence is lesser than what, beta? Critical for what colors? Yellow, orange, red, so on. So they will be refracting into the air. So obviously it should be your yellow because with GR का concept ले रहे हैं. ठीक है ना बेटा? Angle of incidence जो है ना, angle of your incidence is such that it is equal to critical angle. That means angle of incidence is lesser than what, beta? Angle of your incidence is less than critical angle. Less than critical angle. So yellow के लिए, orange के लिए, red के लिए critical angle will be lesser part. ठीक है ना? चलो. Question number 37. Question number 37 beta. A rays from a lens, कौन सा lens है? Convex lens, are converging towards a point P as shown in the figure. How much thick glass plate having a refractive index 1.6 must be located between the lens and the point P? Okay, so that image is formed at your P dash. Okay, यानी shift होना है basically इसमें, isn't it? Shift के लिए condition क्या है बेटा? अपने को formula मालूम है. Delta x will be equal to your thickness T into your 1 minus 1 by mu. ऐसा कुछ रख दो यहाँ पर कहीं पर, इसका थिकनेस ऐसा कुछ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स कितना दे रखा है? 0.3. शिफ्ट दे रखा है 0.3. थिकनेस निकालना है इनटू 1 minus 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6. इसमें से टी सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव मी 0.8 सेंटीमीटर्स. डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. Refractive index of material of a prism is mu is equal to √2 and angle of prism is 60 degrees. The angle of incidence for the minimum deviation will be equal to your how much? यानी mu is equals to your sine I divided by your sine of your r, isn't it? For minimum deviation r की वैल्यू कितनी होती है बेटा? a/2 अपन ने पढ़ा था. तो mu की वैल्यू कितनी हो जाएगी राइट नाउ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज √2, that is equals to sine of your I divided by angle of your prism is given how much for me? 60. यानी 60/2 ना 30. यानी this will be sine of your 30 degrees. Isn't it? So that will give me what? I value is equals to 45 degrees. Direct question. Next one. The diameter of objective lens of the telescope is 0.61 meter. Wavelength of light used is 5000 angstrom. The resolving power of telescope will be equal to how much? Resolving power of telescope का formula मैंने इससे पहले भी बोला था. Resolving power is equals to your T divided by 1.22 times of your lambda. So D दे रखा है problem में, diameter of the telescope is given, wavelength is also given. Just simplify, you will get the answer for this one. So resolving power will be equal to your
D की वैल्यू दे रखा है 0.61, ये दूसरा स्क्वायर divided by this one is 1.22 into wavelength is 5000 angstroms, यानी 5 into 10 to the power of -7 आ जाएगा. So simplify कर लो, this will be coming out for me 10 to the power of 6. First option will be the answer for this. Question number 40. Maximum number of possible interference maxima for a slit separation equal to 2.5 times the wavelength in the Young's double slit experiment will be equal to your how much? So for your Young's double slit experiment अगर हम लोग लिखना है तो angles will be equal to how much? बता, path difference का formula maxima delta x must be equal to your n into lambda maxima के लिए, यानी ये हो जाएगा d into sin theta will be equal to n into lambda. Theta is very small, so sin theta will be approximated to theta n into lambda divided by small d. Theta is very small, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास n divided by lambda की वैल्यू कितनी दे रखा है? The maximum number of possible interference maxima for a slit separation equal to 2.5 times the wavelength. Yani this is lambda divided by, this is 2.5 times of your lambda. Lambda gets cancelled. It is L divided by 2.5. So n divided by your 2.5 मतलब d की वैल्यू कितनी हो रखा है? 2.5 times of lambda. Lambda gets cancelled. तो कितने maxima आएंगे बेटा? Sin theta is equal to your n by this one. So there will be approximately 5 maxima, क्योंकि एक तो आ जाएगा -2 नीचे, फिर उसके बाद -1, उसके बाद सेंट्रल के पास एक, उसके बाद 1, उसके बाद 1/2 के पास maximum. 1, 2, 3, 4, 5. So there will be your 5. Clear है? Good question, beta. Next. The threshold frequency for a certain metal is your V0. Okay. And when a lighter frequency 2V0 is incident on it, the maximum velocity of photoelectron is 4 into 10 to the power of 6 meter per second. The frequency of incident radiation is increased to 5 times of mu naught, then maximum velocity of the photoelectrons will be equal to your how much? Photoelectric equation डाल दीजिए बेटा. Einstein's photoelectric equation. Kinetic energy का formula half into m into your V1 square will be equal to 2 times of your h into nu naught minus of h into nu naught. दे रखा है problem है. So that will be equal to h into nu naught in the first case. ठीक है. Second case के लिए क्या हो जाएगा बेटा? Second case के लिए देखो, ये 2v0 था, उसके बाद क्या हो जाएगा? This will be your half into m into your v2 square is equal to, ये हो गया 5 times of your h into your nu naught minus of your h into nu naught, ये हो गया 4 times of your h into your nu naught. Equation number 2. दोनों को डिवाइड कर लो बेटा. So dividing 1 by your 2, that will be equal to v1 square divided by v2 square will be equal to h into nu naught divided by 4 times of h into nu naught. Nu naught will get cancelled 1 by 4. ठीक है ना? यानी v1 by v2 whole square is 1 by 4. So v1 by your v2 will be equal to 1 by 2. यानी v2 will be equal to 2 times of v1 itself. V2 is equals to 2 times of your V1. यानी that is 2 into your velocity कितना दे रखा है first one का? 4 into 10 to the power of 6. 4 to the 8 into 10 to the power of 6 meter per second. Okay. So this will be the option. Third. Next one. 42. In Bohr's model of an hydrogen-like atom. 1 minute बचा हुआ है बेटा, मैं शायद नहीं कर पा सकूं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45 कर सकते हैं. 43 भी मैंने क्लास में करा हुआ था, सवाल क्वेश्चन एक बार देख लीजिए. 2 radioactive material X1 X2 contain same number of nuclei, 6 lambda per second, 4 lambda